Hello guys, I'm on Sindhi Boys channel today. So guess what? Where are we today? So we are at Ram Tekdi. So it's a place nearby Pune, and we came here for the plogging. So plogging is nothing but the picking up the garbage while you are having the jog. So it's around 7:30. We're going to start soon. So hopefully there would be a lot of fun and some responsibilities for the environment. Cause I'm a legend on the rise, not fazed by the noise. Living large and proud of my city boy vibes. Crafting dreams with my skill, turning days into nights. Elevating every moment. What is up? बोल दो यार, इतनी मेहनत से बता रहा हूँ यार। ये I won't say anything today. भाई ये मेन कलाकार हमारे ब्लॉग के। तो हम लोग आ रहे हैं क्या करने? Hi, Sanjay. I'm Vlogging. here. Hi, vlogging now. कूड़ा उठाने आ रहा है भाई। सुप्रभात। ये जाएगा वो ब्लॉग में जाएगा। सुप्रभात। सुप्रभात। So, हम लोग आए हैं प्लॉगोथॉन करने और अभी वेट हो रहा है कुछ लोगों का जो अंदर दर्शन करने गए हैं। अब ज्यादा कुछ तो है नहीं बताने के लिए क्योंकि इंट्रो सबने दे ही दिया है, तो सीधा ब्लॉग देखना शुरू कर रहे। अच्छे वाले हैं जो ब्रोकन नहीं है वो अलग से कलेक्ट करेंगे। ओके, जो हम आपको बैग्स देंगे तो उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कलेक्ट करना, एंड ग्लास बॉटल है वो आप थोड़ा साइड में रख सकते हो, हम उसको अलग से कोई बोरी भी लेंगे तो उसमें जमा कर सकते हो। ओके, एनी क्वेश्चन? अराउंड 8:45 तक करेंगे, 1 घंटा करेंगे, अच्छे से करना है, 1 घंटा करना है। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? साफ लग रहा है। नींद खुल गई? घर में इतनी कर दूं तो बीवी खुश हो जाएगी। ये सब व्लॉग में जाएगा। भाभी कृपया कमेंट करके बताएं इस बात पे तो।
Good morning, Pankaj ji. Good morning. See how much waste I've collected. Very good. You know who made it. तो प्लीज़ इसको ऐसे यहाँ पे लेटर मत किया गया क्योंकि ये फिर हमें ऐसे उठाना पड़ता है इसको। तो अभी तक इतना उठा चुके हैं और हमें जस्ट 5 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज़, थोड़ा सा पुणे को क्लीन रखो। पूरे इंडिया भाई, पुणे हाँ सॉरी, पूरे इंडिया को क्लीन रखो। बाहर जाके गंदगी करो, दिक्कत नहीं है हमारी। थैंक यू, थैंक यू। संजय, हम सॉरी, लेके आओ, पूरा स्ट्रीट लेके आओ। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कचरे के नाम पे मेरे पास एक ये बैग आदमी है। बिल्कुल कचरा नहीं उठा रहा है, ये सब कचरा किसी और ने डाला है इसकी थैली में। ये सिर्फ थैली लेके भाग रहा है इधर उधर। मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इसमें। मैंने देखो नारियल तक जमा किया है, बाद में छोड़ूंगा। ये है क्रेडिट पगलू। ये क्या है? अच्छा लगा देखिए कि पहले बहुत सारा कचरा दिख रहा था और अभी जैसे उस प्लेस को दोबारा जा रहे हैं तो थोड़ा कम हो रहा है। Throw any plastic covers on roads and outside. So that is the thought it came to me. I think start. अब तो समझ आया कि रोड पे कूड़ा नहीं करना चाहिए और है तो इट इज़ अ गुड कैंपेन की अवेयरनेस फैलाना। जितना भी इफेक्टिव है अनएक्सपेक्टेड था, बट इससे और ज़्यादा लग रहा है कि है और ये और ज़्यादा ऐसे एक्टिविटीज आप क्या कर रहे हो, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट विद योर। तो इट्स नॉट कि हम अकेले ही कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग शायद देखे भी होंगे और वो कचरा नहीं करेंगे और आगे चल के कचरा उठाएंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क हमने अचीव किया। जब हम कचरा उठाते हैं वी आर मेकिंग आवर सेल्फ कि हम एटलीस्ट मैं कचरा नहीं फेंकूंगा रोड पे। जब मैं उठा रहा हूँ, आई नो यहाँ पर 29 लोग हैं, एटलीस्ट 25 लोग का यहाँ पे ब्रेन चेंज हो चुका होगा अभी तक। वो दोबारा बाहर नहीं फेंकेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो एफर्ट क्या लगता है उठाने में। इतने सारे लोग अवेयर हो रहे हैं एंड इसके लिए काम कर रहे हैं। एटलीस्ट हम जब कचरा नहीं फेंकेंगे वो बहुत बड़ी बात है।
तो छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कब अपना कचरा अपने साथ रखते हैं एंड जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। Be throwing a plastic anywhere while you are traveling or while you are roaming around any places. So you might have seen every type of plastic is there. Means all food wraps are there. I can see the biscuit wraps are there. Milk packets are there. Cigarette packets are there. Chips packets are there. So that suggests us a lot of people who are coming to roam around here to have a fun. They are throwing that garbage over here. Nothing else. So while let's take an example of office. There are two buckets. One is for wet waste. One is for the dry waste. Every day you'll see that in dry waste there would be a banana will be thrown into that, or apple would be thrown into that. So first thing that we should have a civic sense not to throw garbage anywhere. At least now we'll talk about a lot about India, where India is going, what people are doing. Everybody is throwing the garbage here and there and littering around it. But we should first look into ourselves, what we are doing, whether we are doing right or not. That would be the first step. Second step, to understand how it would be creating an impact. These things would be creating an impact. So I'll not talk about the impact and all, but second thing is that. Third thing, that now we'll start doing these such activities like vlogging or related to global warming and something like that. Spreading awareness within ourselves, within our family is important. While sharing these things with our family members, friends is also important. So social media will create a great impact over there. We are making sure that we are sharing good posts and something like that, and it's feasible to share such kind of post onto the social media after doing the things, not only while. If anybody is coming and clicking picture with this I'll not allow them. But if you're working and clicking pictures, sharing onto the social media, that is important. So now we'll start from the office, where we'll make sure that wet waste and dry waste we are segregating on our own. In home also we are doing the same. Pune PMC is forcing us to do so. The reason behind that, if you see the wet waste over here, you will not touch that. No one from ourselves will able to touch that wet waste, but because the wet waste will stink a lot, it will release a lot of greenhouse gases like methane and all the things. That's why this segregation of the garbage is important. So when you are at home also, make sure that you are segregating your garbage, your littering. Have a separate buckets of wet waste and dry waste. So the main reason behind that segregation is that, as I said, all the organic components will release greenhouse gases. That is impacting for our whole nature. So that's why that is important. And wet waste is being used for the composting and all other things. So that's the main reason here. And dry waste, not everything will be going to recycle out of it. Most of the thing will go into the dump yard, and those dump yard would be having height of this hill, more than this hill. So if you go back to the Devachivri, there is a dump yard of Pune garbage area, and people around there are protesting for years and years to make sure that that dump yard would be not operational. So thank you all. Thanks for coming. So I was not hoping to have at 25. Even though we registered 38, I was hoping to have only 18, 15 to 20. But still I asked for the lot of people. Most of you came on my request. Most of you came, or some of you came after force. Somewhere. किसने आज सुबह भी रजिस्टर किया? Somewhere not ready to do this, means they were feeling that this is not the right thing to do so. But having this, doing this, you'll have a lot of changes into your life, your mind, and you'll spread across that. So thank you everyone. Just one point. Thank you Prasad. बहुत important point बताया मैंने. So do you have any idea कि what amount of kgs this trash is? Any guess? 20. 20, 25, 25. 20? 20? 40? 10, 5 days. So this is around 70 to 80.
around 78 approximately, as per my calculation. So these are around, I have calculated as 2 kgs around. So this is more than 3 kg this bag. So around 70 to 80 kg. So great. मतलब देखो हम इतने 29 लोगों ने इतना सारा कचरा उठाया 3 गुना. सो इतना कचरा हम कम कर सकते हैं डेली लाइफ में. थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है तो ऐसे ज़्यादा इतना बढ़ता है. Please subscribe to the channel, like the video for the Sindhi boys. Thank you, Hitesh. Never lose insight. Content creator making magic out of thin air, bringing visions to life, passion everywhere, writing waves of creativity on the internet side. From zero to a hero, digital world's my ride. Knock me down, I bounce back higher than before. In resilience, I trust at the heart of my core. Cada paso, cada caída.